Hello everyone, this video is for grade UKG. Let us start. We have three different sections in the sheet, so we will learn about three different subjects: English, Maths and EVS. Let us start with our first subject, English. The question is, match the words that rhyme. Okay, so you have to match words with their rhyming words. Rhyming words को एक दूसरे से मैच करना मीन्स जो ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं सुनने में, उन्हें हमें मैच करना है. लाइक बैक, BACK, बैक. सो व्हाट विल बी द राइमिंग फॉर बैक? बैक के लिए कौन सा राइमिंग वर्ड होगा? Bun? No. Tank? No. Hot? No. Far? Sack? Yes. Back? Sack. 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 Back? Sack. Now, see the next word, jar. जार. इसके लिए कौन सा राइमिंग वर्ड हो सकता है सुटेबल? फ्राई? फार? यस, जार. फार. JAR, जार. FAR, फार. बैंक. Third word is bank. Suitable rhyming word for bank will be tank. Very good. Tank. 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 So, in this way, you have to match these words with their rhyming words. Now, see the next question. Let's write the rhyming words. In this, what you have to do, you have to write the rhyming words. In the previous question, we have matched the word that rhyme, but in this, we have to write the words. Okay, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने मैचिंग किया राइमिंग वर्ड्स की. बट सेकेंड में हमें क्या करना है? हमें राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं. द फर्स्ट वर्ड इज मैट. MAT. मैट. So, the rhyming word for mat will be bat. 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 Wet. Second word is wet. Wet मतलब क्या होता है? गीला. Wet. 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 Rhyming word will be pet. 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 So, in this way, you will write rhyming words for these given words. What are rhyming words? Rhyming words are those words which almost साउंड्स लाइक सेम. ओके, जो सुनने में एक जैसे लगते हो. सेम नहीं होते हैं बट सुनने में एक जैसे लगते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज राइमिंग वर्ड्स. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज ऑफ मैथ्स. इन दिस वी विल लर्न अबाउट फ्रंट एंड बैक. बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब सामने. बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब सामने. So, the question is, color the box blue in which Teddy is at the back and red in which Teddy is in the front. तो हमें क्या करना है? जिस पिक्चर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पिक्चर्स बनी है. सो क्या करना है हमें कि जिस भी पिक्चर में टेडी बेयर पीछे की तरफ बैठा है ऑब्जेक्ट के, उसे आपको ब्लू कलर करना है. कौन सा कलर? ब्लू कलर.
you will color the picture with blue in which the teddy is at the back. उस पिक्चर को ब्लू कलर करना है जिसमें टेडी बैक साइड पे बैठा है, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बैठा है, और जिसमें टेडी ऑब्जेक्ट के सामने है, आगे है, उसे आपको रेड कलर करना है। विच कलर? रेड कलर, यस। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ टी पॉट। टी पॉट है और टी पॉट के सामने टेडी बैठा हुआ है। तो हम कौन सा कलर करेंगे, ब्लू या फिर रेड? रेड, यस, वी विल कलर दिस पिक्चर विथ रेड। कलर द बॉक्स रेड। Another picture. The teddy is sitting at the back of camera. कैमरा के पीछे बैठा हुआ है टेडी बेयर। सो विथ विच कलर वी विल कलर दिस बॉक्स? किस कलर से इस बॉक्स को कलर करेंगे? यस, विथ blue color. Very good. So in this way we have to color the box with blue, red color. So in this way you have to color the box blue if the teddy is at back, and color the box रेड इफ द टेडी इज इन फ्रंट। अगर टेडी सामने होगा तो बॉक्स को रेड कलर करेंगे, अगर टेडी बैक साइड पे होगा तो बॉक्स को ब्लू कलर करेंगे। गॉट इट? या, लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेक्शन व्हिच इज EVS. Stick any one picture for each mode of transport. As we all know, transport. What is transport? A vehicle used to move one place to another, that is called transport. Okay, ऐसा वाहन मतलब ऐसी गाड़ी जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसी को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, फिर चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 तरह के ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं। Land transport, air transport and water transport. How many transport modes are there? Land transport, air transport and water transport. So in this question what we have to do is we have to stick any one picture for each mode of transport. Okay, हर मोड के लिए एक एक पिक्चर हमें यहाँ पर पेस्ट करनी है। लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? बाइसिकल, कार, बाइक, ट्रक, वैन, ट्रेन, so many are there. We have to stick any one picture of them. Okay, इन सब में से कोई एक पिक्चर आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। एयर ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स हैं लाइक हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जेट्स, है ना। सो यू हैव टू पेस्ट एनी वन पिक्चर फ्रॉम दीज ट्रांसपोर्ट। क्या करना है आपको? हर मोड के लिए एक एक ट्रांसपोर्ट की पिक्चर यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल स्टिक एनी वन पिक्चर फॉर ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, yeah, so we have read about 3 different subjects: English, Maths and EVS. I hope you all have understood this sheet very well, but if you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.